Hey students, welcome you all to OCS by Ranjan YouTube channel. So, आम पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंसटा सरी जाइए. होप तुम्हें समस्तंकर एंट्रेंसटा भल हो. आज आम तार आंसर कीटा डिस्कस करदे एंड जो मैंने भी अपकमिंग एग्जाम प्रिपरेशन होगा चाहते से मैंने OCS रंजन ऐप डाउनलोड कर जॉइन हो जाए कि सार सीधा कांटेक्ट भी करेंगे. सो डिस्क्रिप्शन को जाएगी सब डिटेल्स पाई जातु. देन सो आम स्टार्ट करदे. फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द थिंकर हु एसोसिएट विथ द आइडिया ऑफ हेजियोनी. हेजियोनी आइडिया सो किए कौ थिंकरटा एसोसिएट. तो तार करेक्ट ऑप्शनटा होमर है किए ना ग्रामसी. करेक्ट ऑप्शन है ग्रामसी. तार फुल है एंटोनिया ग्रामसी. से इटालियन कम्युनिस्ट थिला, इटालियन कम्युनिस्ट. ठीक अच्छे. तो करेक्ट ऑप्शन है आम डी. देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मार्क्स. कार्ल मार्क्स कौन रिलेटेड. ऑप्शन ए वेलफेयर स्टेट, यूथोपियन सोशलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म ना इवोल्यूशनरी सोशलिज्म. तो करेक्ट ऑप्शन है आम ऑप्शन सी साइंटिफिक सोशलिज्म. ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. यहीटा किए कही यहाँ आम किए ना हेगेल. ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 4, हु डील्स विथ द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स. ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स माने कहाँ सब डील कर किए डील करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शनटा हो आमर प्लाटो. ठीक अच्छे. देन नेक्स्ट पेज को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रपोज दैट सोशल इनइक्वालिटीज आर जस्टिफाइड इफ दे प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द रस्ट ऑफ. तो ये किए कही यहाँ कहते रॉल्स कही. ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 6, in which one of the following books the lion and the fox metaphor occur. ये किए लिखी माने माने को बुक रू ये लाइनटा मैंने आसी मेटाफोरटा. ठीक है. तो ये करेक्ट ऑप्शनटा हो आमर करेक्ट ऑप्शनटा हो कौन ना प्रिंस. ऑप्शन बी प्रिंस. ठीक अच्छे. किए लिखी ना यहाँ लिखी मैकियावेली लिखी. ठीक अच्छे. मैकियावेली मन रख. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु बिलीव दैट द डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन वर लिंक्ड विथ ईच अदर एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो यह किए कही लेलिन. करेक्ट ऑप्शन है आमर लेलिन. ठीक अच्छे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु बिलीव दैट द गोल ऑफ द यूटिलिटेरियन स्टेट इज लिबर्टी रेदर देन हैप्पीनेस. किए मैंने किए यहाँ को विश्वास करते लाइन को किए विश्वास करते कि ना द गोल ऑफ यूटिलिटेरियन स्टेट इज लिबर्टी रेदर देन हैप्पीनेस. तो यहाँ हो तार करेक्ट आंसर हो ना मिल, स्टुअर्ट मिल. ठीक अच्छे. तार करेक्ट आंसर हो स्टुअर्ट मिल. देन क्वेश्चन नंबर 9, हु यूज द टर्म वेल ऑफ इग्नोरेंस. तो यहाँ हो किए ना रॉल्स हो जॉन रॉल्स. ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 10, who argued for the absolute power of the sovereign on the basis of an irrevocable contract among the people to surrender their natural rights to the authority. तो किए कही हब्स. ठीक अच्छे. देखुच माने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आसी आम कौन ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट उपर ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को लेकिन माने बहुत सारा क्वेश्चन आसी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जावा. क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट. तो करेक्ट ऑप्शन है कौन ना लोके. ठीक है. देन हु डिस्क्राइब्ड imperialism as the highest stage of capitalism. तो यह किए कही लेनिन describe imperialism as the highest stage of capitalism. ठीक है.
Then question number 13. Question number 13. Who argued that the state exists only for the continuation of life but for the sake of good life? किए कही यह कही Aristotle. Then question number 14. Which of the following argued that the general will is the foundation of legitimate law? तो यह कही किए ना रोशो. जनरल will, पब्लिक will, पर्सनल will, ये सब ठीक अच्छी. Then question number 15. With whom is the theory of philosopher king associate? With whom is the theory with whom is the theory of the philosopher king associated? एटार करेक्ट ऑप्शन हो आमर प्लाटो. ठीक अच्छे प्लाटोटा. देन what according to the Hobbes what are the according to Hobbes what are the fundamental human motivation? तो according to Hobbes कौन ना fundamental motivation human motivation कौन ना तार करेक्ट ऑप्शन हो fear and self interest. ठीक अच्छे. क्वेश्चन नंबर 17. which tradition considered the state as a tool of domination and believes it to be illegitimate? करेक्ट ऑप्शन हो आम एनर्जिस्ट. ठीक अच्छे. हु पियोनियर द पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच? किए करेक्ट ऑप्शन हो आमर है स्टोन. डेविड स्टोन. तार फुल ना डेविड स्टोन. ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 19. which approach is perspective in nature? कौन करेक्ट ऑप्शन हो आमर नॉर्मेटिव. ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 20. which type of the democracy emphasize thoughtful discussion and debate before making decision? को प्रकार डेमोक्रेसी? करेक्ट ऑप्शन हो आम deliberative. deliberative democracy emphasize thoughtful discussion and debate before making decision. Then question number 21. in which theory of state the power of government is limited and the rights of individual are protected by constitutionally established norms and institutions? एंड करेक्ट ऑप्शन हो आमर कौन ना लिबेराल डेमोक्रेटिक. ठीक अच्छे. देन which theory of feminism locates the root cause of women's oppressions primarily in patriarchal gender relation? करेक्ट ऑप्शन हो हमारा ये रेडिकल फेमिनिज्म. ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23. which of the following argues that capitalism and patriarchy are interconnected system that cause women's oppression? करेक्ट ऑप्शन हो आमर कौन ना सोशल फेमिनिज्म. सोशलिस्ट फेमिनिज्म. ठीक अच्छे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. which of the following is a capital of the idea of universal truth and objective reality? तो करेक्ट ऑप्शन हो पोस्ट मॉडर्निज्म. ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 25. which of the following is based on the assumption of the individual as a rational agent with a capacity to deliberate and make an informed choice? तार आंसर हो आमर कौन ना नेगेटिव लिबर्टी. देन क्वेश्चन नंबर 26. who argues that human freedom is impossible under the condition of exploitative social relation? किए कही कार्ल मार्क्स. ठीक अच्छे. which approach to the political theory considered equality as a core principle? तो तार करेक्ट आंसर हो नॉर्मेटिव. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. which of the following statements is true? कौन अच्छी ऑप्शन ए अच्छे लिबरल ट्रेडिशन of egalitarianism emphasize equal wealth and opportunity? Then এটা তো ভুল. The option B socialist tradition of egalitarianism emphasize equal rights and freedom. এটা ভুল. Then liberal tradition of egalitarianism emphasize equal rights and freedom. equal rights and egalitarian रे equal rights and freedom था. तो एटा हो आम करेक्ट ऑप्शन टा. ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 29. which of the
following condition provides the best defense against social exclusion? Correct option टा है हमको separation between state and market, active role of the state in supporting market forces. Then option C authoritarian state, and option D welfare state. The correct option टा है welfare state D. Then question number 30. What is procedural justice? What is procedural justice? The correct option है जो हमारा justice requires a meticulous following of the rules. ये जो तेरा correct option था, ठीक है? Then question number 31. Who proposed that justice prevails when every department from equality can be rationally justified? ये किए कोई थे? ମାନେ କିଏ ପ୍ରପୋଜଟା କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା ହେଇଯିବ ଆମର ରାୱଲ୍ସ। ଦେଖୁଛ ମାନେ ଆମେ 31ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲୁଣି, ହେଲେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ଥଟ୍ସ ଟପିକ୍ରୁ ବି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 32 क्वेश्चन नंबर 32. What does multiculturalism stand for? Multiculturalism कहाँ पर स्टैंड नहीं? दार करेक्ट ऑप्शन टा है आमर कौन ना देखा प्रमोशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिटी एमंग इफेक्ट डिफरेंट कल्चर विद इन ए लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट ना एटा हेनी बी रे इम्पोजिशन ऑफ कॉमन नेशनल कल्चर एंड डाइवर्स ग्रुप टू प्रमोट यूनिटी एंड पेट्रियटिज्म ना देन reconciliation of aspiration to political equality with the fact of social and cultural differences within liberal democratic states. तो एट है हमारा करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। 32 सी करेक्ट ऑप्शन था। देन क्वेश्चन नंबर 33. by which amendment the word secular and socialist were added to the constitution? तो तार करेक्ट आंसर है 42 amendment act के 1976 रे, ठीक है। देन who described the preamble as the keynote to the constitution? किए से अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है। देन which type of equality of article 15 and 16 the Indian constitution provide? कौन जानी फर्स्ट 14 ରୁ 18 कौन, देन 19 ରୁ 22, तो यहाँ है आम इक्वालिटी बिफोर लॉ माने सोशल इक्वालिटी सब, ठीक अच्छे माने इक्वालिटी बिफोर लॉ रे। तो 15 कौन कही कौन है यहाँ 15 कौन कही 15 है 15 कौन डिस्क्रिमिनेशन ऊपर कथा है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देन 16 रे कौन 16 रे अनटचेबिलिटी ऊपर अनटचेबिलिटी तो यहाँ दुईटा सोशल, तो सोशल इक्वालिटी ऊपर मैंने 15 और 16 आर्टिकल मेंशन कराई तार करेक्ट ऑप्शन है सोशल इक्वालिटी ऑप्शन डी। देन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आर्टिकल लिखाई ना 21 एंड देन 21 ए कौन ना से माने एजुकेशन विषय फ्री एजुकेशन विषय कितने 6 ରୁ 14 वर्ष फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देन 37 व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटीज? यहाँ सीधा मारदेव 39, ठीक अच्छे। देन व्हिच प्रोविजन ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एग्जामाइंड एंड रिकमेंडेड अपन बाय द सरकारिया कमीशन? तो करेक्ट ऑप्शन है कौन ना रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 39. चूज द करेक्ट वन लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट? तो यहाँ तो करेक्ट अच्छी लोकसभा एंड राज्यसभा ना यहाँ भूल अच्छी प्राइम मिनिस्टर लोकसभा एंड राज्यसभा ना स्पीकर लोकसभा एंड राज्यसभा। तो करेक्ट ऑप्शन है कौन करेक्ट ऑप्शन है आमर ए लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। देन व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिवाइव इट्स प्रीवियस डिसीजन ना सेम एज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ना पावर ऑफ जुडिशियरी टू रिव्यू
the constitutionality of laws and action. Correct option टा C. Then power of Supreme Court to review decision of High Court. तो correct option टा C. Then question number 41. Choose from the following the law that provides for special powers to Gram Sabha in tribal areas. तो कौन एटार करेक्ट ऑप्शन रहा ऑप्शन बी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट ठीक अच्छे. देन 42 चूज द करेक्ट वन. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कन्स्टिट्यूशनल बॉडी. एटा करेक्ट इलेक्शन ऑफ माने इलेक्शन कमीशन तो कन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है. तापर नेक्स्ट ऑप्शन भी देखी दे द Election Commission of India has been established by an act passed by the Parliament. Now, the Election Commission has been established by a judicial order. Now, the Election Commission was created by an executive system. Now, तो correct option है जो हमारा A. ठीक है. Then, which of the following parties has not been guided by regional aspiration? The correct option है जो Communist Party of India. Question number 44. How do you conceptualize a set of policies and programs that aim to address discrimination and create opportunities for advantaged groups? The correct option है जो हमारा कौन ना affirmative action. Then 45. Which dimension of the Indian state is highlighted by the Unlawful Activities or Prevention Act? अनलॉफुल प्रिवेंशन कौन अनलॉफुल एक्टिविटीज कौन से क्या मैंने क्या डील्स करे ना. करेक्ट ऑप्शन टा आमर कोएर्सिव पर डील करे ठीक अच्छे. देन 46. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच. राम मोहन रॉय गीता रहस्य राम मोहन रॉय लिखि नथिले. नेहरू माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मैडम एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आई थिंक गांधीजी लिखिले. देन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू लिखिले. तो एटा है तो अंबेडकर कौन लिखी ना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट इज द नेचर ऑफ किंगशिप इज इन अगण्य सूत्र किंगशिप कौन कह जाए कौन किंगशिपर नेचर कौन. तो करेक्ट ऑप्शन है द किंग इज एनोइंटेड बाय गॉड. द किंग इज एनोइंटेड बाय गॉड ठीक अच्छे. देन हु इज एसोसिएटेड विथ द मंडला थ्योरी. मंडला थ्योरी मैंने मंडला थ्योरी कहा सो एसोसिएट तो ताहे जो कौटिल्य ठीक है. देन व्हेयर वेदव्यास's कंसेप्ट ऑफ राजधर्म लोकेटेड. वेदव्यासर कौटी राजधर्म लोकेटेड है ऑब्वियसली महाभारत वेदव्यास महाभारत लिखी और रामायण के लिखी रामायण वाल्मीकि लिखी ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 50. Which one of the following is true about Abul Fazl's theory of sovereignty? So correct option है जो अमर कौन ना sovereignty was not to be related with any particular religion. तो ये जो correct option ठीक है. Then which is a correct statement about Pandita Ramabai? So correct option है जो A. She intended to keep religious motives at a distance from her social one. Then question number 52. What was Gandhi's concept of Swaraj? So correct option है जो it means self-discipline by always obeying the authority. Then it implied pursuit of self-interest under all circumstances. It meant duty to protect the security of the state. It implied that everyone had the freedom to resist authority when needed. So correct option है जो I think A. Then question number 53. What was Nehru's strategy for establishing socialism? So correct option है वो कौन ना secular politics ठीक अच्छे. Then question number 54. Who formulated the concept of total revolution? So ये जो हम जयप्रकाश नारायण JP नारायण. Then question number 55. Who believed that the nationalism was a narrow form of patriotism and that was anti-spiritual and anti-human? Who believed that?
या किए विश्वास करते तो आंसर है माने रवींद्रनाथ टैगोर ठीक अच्छे सो नेक्स्ट क्वेश्चन 56 what is the purpose of civic culture what is civic culture what is what is the purpose of civic culture so civic culture it provides stability to democracy ये correct option है पर then it makes democracy more vibrant by helping to develop a fully participant culture correct दीटा correct माने किसी तो मैंने गड़बड़ अच्छी it makes democracy weak by encouraging parochial political culture ना it makes democracy dull by promoting subject culture so I think A और B भितर किसी माने जो जहाँ भी पारे एक तो A ही पारे आउ B ही पारे मैं दीटा ऑप्शन टी कंफ्यूज अच्छी तो हमें देखना पड़े कि एटा ठीक अच्छी then question number 57 what is true about new institutionalism what is true about new institutionalism so तार करेक्ट ऑप्शन है कौन ना इट एग्जामाइन हाउ इंस्टीट्यूशन लाइक रूल्स नॉर्म्स एंड कल्चर्स लिमिट द चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल करेक्ट ऑप्शन है सी देन 58 व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी गोटे पॉलिटिकल पार्टी गोटे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन ऑब्वियसली टू कैप्चर पावर एटा फर्स्ट प्रायोरिटी ठीक है देन क्वेश्चन 59 व्हाट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन टू अचीव व्हाट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन टू अचीव सो करेक्ट ऑप्शन है जो बी इट हेल्प्स टू क्रिएट ए लेजिस्लेटिव बॉडी दैट रिफ्लेक्टेड द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सपोर्ट फॉर ईच पार्टी ईच पॉलिटिकल पार्टी ठीक है देन करेक्ट ऑप्शन है बी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इमेजिन कम्युनिटीज इमेजिन कम्युनिटीज बुक रो ऑथर किए सो एटा वेरी इजी कौन बेनेडिक्ट एंडरसन पढ़ी थे जानी तो मैंने देन क्वेश्चन नंबर 61 व्हाट इज द एसेंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल व्हाट इज द एसेंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म व्हाट इज द एसेंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म तो कौन हम कंप्लीट एसिमिलेशन ऑफ कॉलोनियल रूल करेक्ट इट इज ए न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियल पॉलिटिक्स ना करेक्ट भूल हो इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियल पॉलिटिक्स ना बोथ एंड बी ना सो करेक्ट ऑप्शन है सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द एसेंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म देन क्वेश्चन नंबर 62 Huntington claims that there have been three waves of democratization. When did the second wave commence? Huntington claims that there have been three waves of democratization. When did the second wave of commence? So correct option is mid 1970s. Then which of the following is true? So correct option है जो हमारा फेडरलिज्म इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड यूनिटी एंड डाइवर्स सोसाइटी ना फेडरलिज्म नेसेसरी वीकेंड स्टेट इंटर पॉलिटिक्स नो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कैन easily emerge in the federal state now federalism in the outcome of the theory of separation of power तो करेक्ट ऑप्शन है जो डी फेडरेशन में जाने सेपरेशन ऑफ पावर ठीक अच्छे माने स्टेट माने सेंट्रल स्टेट को कौन पावर सेपरेशन करा जाए स्टेट्स मान को पावर सेपरेट कर दिया जाए भागी भागी माने भाग करा जाए ठीक अच्छे देन क्वेश्चन नंबर 64 who was the first one to apply the comparative approach to the study of politics so correct option है जो हमारा किए अरिस्टोटल then choose the correct statement correct option टा choose करेगा कौन capitalism recognize society into classes on the basis of ownership land now capitalism recognized the society into classes on the basis of ownership of capital capitalism माने obviously capital तो करेक्ट ऑप्शन टा बी ही पारे आउ आगु टिके देखिए तार ऑप्शन देखा कैपिटलिज्म रीऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ ओनर नो देन कैपिटलिज्म रीऑर्गेनाइज सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर नो सो करेक्ट ऑप्शन है जो बी कैपिटलिज्म रीऑर्गेनाइज सोसाइटी इनटू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ कैपिटल देन क्वेश्चन नंबर 66
choose the correct statement. Colonialism was a consequence of growth of capitalism and its quest for more profits by controlling resources, labors, and markets throughout the world. Then colonialism was the result of the desire Western countries to develop liberal democracies in the other parts of the world. Option C, colonialism led to the economic prosperity of the colonies. Colonialism sought to the protect indigenous notions of the property rights in the colonies. So correct option is A. Then question number 67. Which of the following countries can be considered an example of settler colonialism? Settler colonialism मैंने को countries एडी अच्छी settler colonialism रे तो तार correct option है जो आमर करना USA. ठीक अच्छी. Then next question आडू question number 68. Which anti-colonial leader and intellectual wrote the book Black Skin White Mask? तो एटा किए लिखिले ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क बुकटा किए लिखिले ना एटा लिखिले किए ना फ्रांच फैनन. देन व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द यूएसए? यूएसए को टाइप रो गवर्नमेंट अच्छी ना फेडरल गवर्नमेंट. ठीक अच्छी. Then question number 70. Which of the following is an ideal example of the application of the theory of separation of powers? Separation of powers theory को माने किए डील करे ना एबे हम जहाँ पढ़ते हम टिके आगु मुझे कही फेडरेशन माने सेपरेशन ऑफ पावर. फेडरल स्टेट माने सेपरेशन ऑफ कौन ना पावर. सो एडी यूएसए तार उल्टा मैंने बुले के दीजिए क्वेश्चन. यूएसए कौन है फेडरल है तो ये किए सेपरेशन ऑफ पावर किए ऑब्वियसली यूएसए हम. ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 71 आड़क जा. Question number 71. How does realism explain the nature of international politics? Realism internal politics माने केमिति explain करे. So correct option है जो हमारा A. It portrays the international politics as power politics. Then 72. Choose the correct one. Correct कौन? Neorealism explain the power politics in terms of egoism. No. Neorealism explain the power politics in the term of energy. Okay, it had how. Then realism primarily explain power politics in the terms of energy. No. The realism does not care about balance of power. No. The correct option is B. Then 73. Which treaty marked the end of the First World War? तो कौ ट्रिटी वर्ल्ड वार वन शेष में कौ ट्रिटी होता ना ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स केवे ना 28 जून 1919 जहाँ परवर्ती समय वर्ल्ड वार 2 गोटे क्राइसिस होता कौन ना ट्रिटी ऑफ वर्साइल. ठीक अच्छे. देन 74. अंडर व्हिच पॉलिसी did the USA provide funds to Western Europe and brought those countries under American influence during Cold War? Then तार करेक्ट ऑप्शन है जीवो मार्शल प्लान. देन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ग्लोबलाइजेशन कौन? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन समस्त जानी कथा. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन तो करेक्ट ऑप्शन मुझे मैंने एमती लिखिक कहीदे. इट इज द प्रोसेस व्हिच इज क्रिएटेड एंड disseminated by large scale of forces like the nation states, especially of the advanced world, that is the north. ठीक अच्छे. ये तार करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 76. इन व्हिच ईयर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टाब्लिश को ईयर रही ना 1925. ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 77. व्हिच वन ऑफ द TNCs operates in agricultural business? तो करेक्ट ऑप्शन है जो आमर कौन ना मोनसेंटो. ठीक अच्छे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 78. What is World Social Forum? What is World Social Forum? It is an correct option है A. It is an annual meeting of civil society organization that oppose to new liberalism and capitalism. Then
79. Which international agreement aims to reduce greenhouse gas emission that contribute to global warming? So correct option टा है आमर किए ना क्योटो प्रोटोकॉल ठीक है. Then what is WMD? WMD stands for कौन? WMD stands for weapons of mass destruction. कौन? Weapons of mass destruction. Then question number 81. When did the treaty on the non-proliferation of nuclear weapon by NPT came into force? When? So correct option है 1970 रे 1975 मार्च रे आम एनपीटी टा माने फोर्स रे आसला ठीक अच्छे. जार का एम कौन थिला ये एनपीटी रो एम कौन थिला ना प्रिवेंट क्या प्रिवेंट करने प्रिवेंट न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी का ये एनपीटी रो एम कौन थिला ना प्रिवेंट कर न्यूक्लियर वार मान न्यूक्लियर वेपन को आउ से टेक्नोलॉजी को ठीक अच्छे. देन तार करेक्ट ऑप्शन है बी 1970. देन क्वेश्चन नंबर 82. व्हेन डिड द टेररिस्ट अटैक ऑन द ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टेक प्लेस? एटा बहुत इजी सब बेले शुणुव कौन ना 9/11 बोलिकी 9/11 बोलिकी जो ट्विन टावर मैंने दीटा प्लेन आसी मैंने बाड़े ठीक अच्छे. जहाँ किए होता ओसामा बिन लादेन मैंने सी आतंकवादी थिला. तो कौन ना 11 सेप्टेम्बर 2001 रे करेक्ट ऑप्शन एटा ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 83. Who championed the idea of freedom from want? The correct option है मिल्टन फ्राइडमैन एटा. देन अमर्त्य सेन एंड महबूब उल हक. तो करेक्ट ऑप्शन है आमर डी अमर्त्य सेन एंड महबूब उल हक ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 84. करेक्ट ऑप्शन है कौन डी. Then question number 84. When did the Convention on the Protection of Rights of All Migrant Workers and Members of their Families came into forces? तो correct option है 2003. Then which concept has been replaced by a new concept called Global South? ये Global South concept कहाँ रिप्लेस रही थी? देन कहाँ रिप्लेस रही थी ना यहाँ थर्ड वर्ल्ड ठीक अच्छे. देन करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वर्ल्ड. देन क्वेश्चन नंबर 86. Who defined administration as the organization and direction of human material resources to achieve desired ends? एटा किए कहिथिले किए ना या कहिथिले जेपी प्लिफनर जेएम प्लिफनर कहिथिले ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 87. Who is called the father of American public administration? American public administration द फादर कहा कहला ना से वुड्रो विल्सन ठीक है वुड्रो विल्सन. देन क्वेश्चन नंबर 88. The experiments conducted by Taylor were intended to understand what? Option C, the best way to carry out specific tasks. Correct option है एडा. Then question number 89. Which of the following is not a behavioral characteristic of bureaucracy? So correct option है हमारा है ना रोल स्पेसिफिसिटी ठीक अच्छे. Then question number 90. The classical theorists attach more importance to the dash ना structure of organization. Correct option है structure of organization एटा. Then question 91. Who is well known for Hawthorne experiment and considered as one of the pioneers of human relation approach to organization? So यार correct option है कौन ना एल्टन मायो. The 92.
who among the following developed the ecological approach to administration? Ecological approach किए develop करथिले? So correct answer टा है जो हमर कोन ना फ्रेडरिक्स ठीक अछि. So 93 question number. Choose the correct option. New public administration is a managerial approach that aims to improve the efficiency of public administration. Now, then new public administration uses business practices and tools to make government function more like a private enterprise. No. New public administration is a reformative approach that aims to improve government service and make them more responsive to need of the public. एडा ही पारे. Then last option देखी दबा. New public administration is the same as new public management. So एटा भी आपनी तो correct option है जब C. Then in which year performance budget was introduced in India? परफॉर्मेंस बजेट को ईयर रही ना 1968 रही. Then show question number 95. The Balwantrai Mehta committee was a committee on next democratic centralization, Panchayat Raj institution, EDA, then administrative arrangements for rural development and the community development program. So B and C ଭିତରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ବଲବନ୍ତରାୟ ମେହତା କମିଟି କାହା କେଉଁ କମିଟି ଥିଲା ବୋଲି ଜାଣୁ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ. ସୋ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା ବି ହେଇପାରେ. ହେଲେ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ସେ ମାନେ ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହତା ହିଁ ସେଇଟା ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ କମିଟିରେ. ଠିକ୍ ଅଛି. ଦେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ତ ଅପସନ୍ ବିଟା କରେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପସିବଲ୍ ଅଛି. ଠିକ୍ ଅଛି. ଦେନ୍ क्वेश्चन नंबर 96. क्वेश्चन नंबर पंचायत राज इज ए सिस्टम ऑफ पंचायत राज सिस्टम कौन ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. आमर दुईटा सेल्फ गवर्नमेंट अच्छी ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गोटे आउ अर्बान सेल्फ गवर्नमेंट गोटे. जोटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन कौन आसो ना रूट लेवल कौन पंचायत तापर मैंने ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत पंचायत समिति देन जिला परिषद आउ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट कौन फर्स्ट एनएससी आसब देन म्युनिसिपालिटी आसब तापर कॉर्पोरेशन. ठीक अच्छे एटा. देन क्वेश्चन नंबर 97. व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिश द सिस्टम ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. माने आम दुटा मुझे टिका आगर कहती लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गोटे आउ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट गोटे. ठीक है. लोकल से मिला विलेज एरिया मानक हुए आउ अर्बन है तो सिटी मानक टाउन सिटी मानक हुए. तो ये आम अर्बन सेल्फ गवर्नमेंटा को अमेंडमेंट द्वारा ही ना 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे आउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंटा के ना 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे एटा. तो आमर ए क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन रहा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992. ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 98. व्हेन डिड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कम इनटू एक्जिस्टेंस? व्हेन तो एटा 2013 हो 5 जुलाई आई थिंक 5 जुलाई रही. देन क्वेश्चन नंबर 99. व्हाट इज द incremental module of public policy? So policy maker address immediate problems with short term solution. Then policy makers use logic to find the best policies to achieve their goals. No. Public policy is the result of struggle between groups. No. Policy the response to demands from the political environment. No. So correct option है ए आमर पॉलिसी मेकर्स एड्रेस इमिजिएट प्रॉब्लम्स विथ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन. ठीक अच्छे. देन लास्ट क्वेश्चन आमर आज ना व्हेन वाज द मनरेगा पास्ट? मनरेगा कौन? मनरेगा ना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी. तार फुल फॉर्मूला एम्प्लॉयमेंट गारंटी. ठीक अच्छे. गारंटी शो केबे स्टार्ट होता मैंने केबे पास होता? तो तार करेक्ट ऑप्शन है 2005 आई थिंक मुझे मत मन अच्छी अगस्त 22 ना 23 रे डेट. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन है बी
सॉरी ए 2005 सो आम आंसर डिस्कसन सरी जाइए सो किसी डाउट थिले आमको कमेंट जनातु सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।